Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, SSC CGL 2024 ओवर हो चुका है। इतनी ज्यादा हड़कंप मचा रखा था, काफी सारे कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा इस उलझन में लगे हुए थे कि यार पेपर तो दे दिए पर रिजल्ट अब क्या रहेगा। बट एज दे ऑलवेज से कि व्हाट्स इन आवर हैंड इज टू प्रिपेयर फॉर समथिंग एंड देन गिव आवर बेस्ट शॉट। उसके बाद तो रिजल्ट जो भी होगा ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। If we have prepared well, if we have given the examinations well, so nobody can stop it from coming in the coming your name coming in the list. तो ठीक है, चलो उसको तो छोड़ो। अब जैसे कि एग्जाम ओवर हो ही गए हैं, सीजीएल के ओवर हो गए हैं, बट यस अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं एसएससी एमटीएस अब शुरू होने वाला है। नाउ दैट सीजीएल इज ओवर, एमटीएस के एग्जामिनेशन आपके 30 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल इन्फो आइलैंड पे, बिकॉज वी विल बी कमिंग अप द प्रिपरेटरी वीडियोस फॉर ऑल एमटीएस कैंडिडेट्स एंड ऑल्सो ऑल ऑफ यू ऑल हु आरंट इवन प्रिपेयरिंग एंड गिविंग द एसएससी एमटीएस एग्जाम। कोई बात नहीं, फिर भी वो प्रिपरेटरी वीडियोस आप भी जरूर से देखिएगा, बिकॉज दोज क्वेश्चंस दैट वी विल बी शेयरिंग विद यू गाइज वुड बी वेरी मच इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। तो प्लीज उसको भी अच्छे से देखिएगा एंड अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिए ही करिएगा, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट गिव्स अस द मोटिवेशन टू कम अप विद सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सो ये सब तो हो गया इन अ नटशेल कि अब हम क्या कर चुके हैं, क्या करने वाले हैं। नाउ व्हाई वी आर हियर टुडे, व्हाट वी ऑल आर गोइंग टू डिस्कसिंग इन टुडेज वीडियो, वो आपसे शेयर कर देते हैं। सो गाइज आई वाज आस्क्ड बाय अ लॉट ऑफ यू कि मैम एसएससी सीजीएल के आपने एनालिसिस तो प्रोवाइड करा दिए एंड वी हैव सीन ऑल ऑफ दैट, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चंस, इंग्लिश वोकैब जो था वो जो एसएससी सीजीएल की शिफ्टों में पूछा गया था, दैट हैज नॉट कम अप टू अस। तो प्लीज आप एसएससी सीजीएल 2024 के पेपर में जो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी जरूर से शेयर कर दीजिएगा। सो गाइज आज के इस वीडियो में वी विल बी डूइंग द एग्जाम एनालिसिस वीडियो अगेन। So we will be doing the paper analysis of English alone, ठीक है, और किसी सब्जेक्ट का इसमें हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। We will be discussing the questions of English जो कि आपको 9 सितंबर से लेके 26 सितंबर के जो आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए हैं। इफ आई मिस आउट ऑन समथिंग, अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है एंड यू हैव गिवन द एग्जामिनेशन, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा, सो दैट इट कैन हेल्प अस एंड द अदर कैंडिडेट्स जिन्होंने पेपर दिया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कैसा रहा है प्रश्नों का लेवल इस बार, कैसे रहे हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स जिनसे हमने बात करने की कोशिश करी थी उनके हिसाब से जो इंग्लिश का लेवल था, इट वाजंट दैट हार्ड, इट वाजंट दैट डिफिकल्ट, इट वाज बिटवीन इजी टू मॉडरेट फॉर देम। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से हमें बताइएगा। एंड यस, चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे कि जब भी हम किसी न्यू वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। सो यस, बहुत हो गई बातें, नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस एंड देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके 9 सितंबर से लेके 26 सितंबर के पेपर में। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। और यस, प्रिपरेटरी वीडियोस की जैसे मैंने बात करी, चैनल पे सिनोनिम एंटोनिम के भी वीडियोस अवेलेबल हैं। मैं आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सो गाइस, आपसे सिनोनिम पूछा गया था एनरेज का। तो एनरेज के लिए ऑप्शन आपको दिए गए थे ये चार: एलिविएट, इन्फ्यूरिएट, मॉडरेट एंड प्लेकेट, जिसमें आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन बी, इन्फ्यूरिएट। जो एनराज होता है, एनराज का मतलब होता है इन्फ्यूरिएट, सो एनराज का सिनोनिम हो गया इन्फ्यूरिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। तो आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको चार ऑप्शंस गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट कि किस पर्टिकुलर ऑप्शन में एरर है। So the sentence which was given was most people are familiar of the spraying of houses with poisonous substances which kill disease carrying insects। ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शंस दे रखे थे: most people are familiar of the spraying, option B of houses with poisonous substances which, option C kill disease carrying insects, और ऑप्शन डी no improvement। कि पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। So the correct answer was option A। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है।
जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ऑफ गिवन है ना, फेमिलियर ऑफ, इस ऑफ की जगह विद आएगा. सो जस्ट रिमूव दिस ऑफ फ्रॉम विद. ठीक है, मोस्ट पीपल आर फेमिलियर विद द स्प्रेइंग, सो दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव ऑफ द वर्ड कंस्ट्रेंट. ठीक है, कंस्ट्रेंट आपको वर्ड गिवन था जिसके लिए चार ऑप्शंस गिवन है, हजर्ड, बर्डन, कंसर्न या कंट्रोल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है कंट्रोल. ठीक है, द अदर वर्ड फॉर द वर्ड कंस्ट्रेंट कैन बी यूज्ड एज कंट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसमें आपको चार ऑप्शंस गिवन है, कंटिनम, कंटेनम, कंटिन्यूम, कंटिन्यूम, CONTINUUM. सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट. जो आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका CONTINUUM, कंटिन्यूम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड कंकर. कंकर आप बोलते हैं ना, कॉन्कर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर या दिस पर्टिकुलर डे, समथिंग लाइक दैट. तो उसके लिए आपको ऑपोजिट बताना था. सो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, डिसअग्री, डिसअपियर, डिसअरेंज या डिस्करेज. तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिसअग्री. सो द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड कॉन्कर इज डिसएग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू इम्प्रूव द फॉलोइंग सेंटेंस. ठीक है, किस तरह से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ करेक्शन अगर नीडेड है तो वो करके. सो द सेंटेंस विच वाज गिवन वाज, एंगर इज अ नेचुरल adaptive response of threats. तो इसमें आपको ऑप्शंस गिवन जो थे वो थे, टू थ्रेट्स, फॉर थ्रेट्स, विद थ्रेट्स, या फिर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है. द सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट. So the option A which says two threats is correct answer. यहाँ पर आपका होना चाहिए, instead of this of यहाँ पे आपका two होना चाहिए. Anger is a natural adaptive response to threats. So that makes a perfect sense for this particular sentence. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इट वाज इडियम ऑफ फ्रेजेस में से आपको पूछा गया था दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब ऑफ द इडियम ब्रोकन रीड. ठीक है, जो ब्रोकन रीड आपका ईडियम होता है, इसका मतलब आपसे पूछा गया था, जिसमें चार ऑप्शंस गिवन थे. ऑप्शन ए, ओवरबेयरिंग. ऑप्शन बी, अ वीक अनरिलायबल पर्सन. ऑप्शन सी, एन अनप्लेजेंट सिचुएशन. या ऑप्शन डी, टू सफर ब्रोकन स्पाइन. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, विच सेज अ वीक अनरिलायबल पर्सन. सो ब्रोकन रीड अगर आप कहते हैं किसी बंदे को इंडिकेट करने के लिए या किसी सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए दैट ब्रोकन रीड है, तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल, दैट इट्स अ वीक और अनरिलायबल पर्सन. For example, he is a broken reed, or maybe she is a broken reed. You cannot trust him because he is a broken reed. So he is a weak, unreliable person that you cannot rely upon. मतलब आप उस पर 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लेचुरी. ओके, इसमें आपको ऑप्शंस गिवन है, चेस्टिटी, लस्ट, वॉन्टननेस या डिबेचरी. सो इसका करेक्ट आंसर है गाइज ऑप्शन ए, चेस्टिटी. चेस्टिटी इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लेचुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है वो आपको बताना है. इज इट ऑप्शन ए, एब्सटेन, और ऑप्शन बी, कॉम्प्रहेंशन, और ऑप्शन सी, डिक्शनरी, या ऑप्शन डी, अडोलसेंट. अडोलसेंट, ओके, ऑप्शन डी है. एंड एज इट कैन बी सीन, यहाँ पर ये जो ओ है, दिस इज एक्स्ट्रा, सो इट्स अडोलसेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू चेंज द वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज करना है. राधा इज वॉचिंग अ मूवी इन द सिनेमा हॉल. सो will it be a movie being, option A, मतलब a movie being watched by Radha in the cinema hall. Option B, a movie was being watched by Radha in the cinema hall. Option C, a movie has been watched by Radha in the cinema hall. Or is it the option D, a movie is watched by Radha in the cinema hall?
So, guys, as you can see in the sentence, that Radha is currently watching a movie, right? She is watching a movie in the cinema hall right now, right away. तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट द अ मूवी बीइंग वॉच्ड. ठीक है, बीइंग वॉच्ड क्योंकि शी इज डूइंग दैट थिंग इन प्रेजेंट, राइट? शी हैज नॉट डन इट कंप्लीटली, शी इज डूइंग इट. तो अ मूवी बीइंग वॉच्ड बाय राधा इन द सिनेमा हॉल इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड क्वाइट? जिसमें चार ऑप्शंस हैं: स्ट्रॉन्ग, पंडेमोनियम, इनकम्प्लीट या फिर वायलेंट. तो गाइस काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे थे कि मैम इसका तो वायलेंट होना चाहिए, बट नहीं गाइस. जो पेंडोमिनियम वर्ड है ये ज्यादा रिलेट कर रहा है इसके ऑपोजिट से, क्योंकि पॉन्डेमोनियम का मतलब होता है शोरगुल, मतलब हल्ला गुल्ला करना. तो जो क्वाइट है इट सेज साइलेंट, मतलब एकदम चुप्पी. और जो पॉन्डेमोनियम है इट सेज हल्ला गुल्ला करना, शोरगुल करना, शोर मचाना. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर. Next question, what is the alternative of the word foliage? Is it foolishness, urgency, firmness, या greenery? So option B, greenery is the correct answer. Greenery can be used as the alternative of the word foliage. Next question, find the correctly spelled word again. Option A, entirety. Option B, gracious. Option C, discern. या option D, contestant. तो गाइस कंटेस्टेंट में तो साफ दिख रहा है यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है. तो ऑप्शन सी जो है आपका ये सही है, बिकॉज ग्रेशियस में भी टी की जगह सी आएगा. तो ऑप्शन सी जो है डिसर्न इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्क्वेल? ऑप्शन ए calm, ऑप्शन बी storm, ऑप्शन सी breeze या ऑप्शन डी gale. So the correct answer for this question is option A, calm. ठीक है, वर्ड स्क्वेल जो है उसका एंटोनिम calm होगा. Next question, you have to find the one word substitution for this particular uh, sentence, that a sudden desire or change of mind. If this particular thing happens to you, what are you going to say? Is it saunter, megrim, hysterical, yeah, vicinage? So option B that says megrim is the correct answer. Megrim is something that you know refer when you are having a sudden desire of something, or you want to change something all of a sudden because you changed your mind. So megrim is the word for that. Next question, what is the meaning of the idiom in for a penny, in for a pound? This is a kind of idiom that has been used worldwide very frequently and very commonly. So in for a penny, in for a pound का मतलब basically क्या होता है? If a person decides to do something, then they should fully commit to it without doing it half-heartedly. मतलब अगर you have started doing something ना, तो you should not stop in between. You should complete it whole heartedly. Half heartedly बिल्कुल नहीं करना है, पूरा करना है. If you are in for a penny, then you have to in for a pound. So this is the meaning of this idiom. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इडियम. इडियम का ही अब आपको सिनोनिम बताना है. इडियम में सेंटेंस होता है, लोक्यूशन होता है, डायलेशन होता है या कंपाइल होता है. सो इडियम इज बेसिकली लोक्यूशन. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Next, you have to fill in the blank with the appropriate word. There's really no such thing as the voiceless. There are only the dash silenced or the preferably unheard. Arundhati Roy says this. So options are option A, unknowingly, option B, deliberately, option C, presently, or option D, charmingly. So option B is the correct answer, deliberately. So when you are going to fill that sentence with deliberately, it would be like, there's really no such thing as the voiceless. There are only the deliberately silenced or the preferably unheard, said by Arundhati Roy. Next, you have to find out the opposite of the word. Okay. He appeared to be a man of enthusiastic character, disheveled in appearance. आपको disheveled जो word है उसका opposite बताना है.
Is it option A, untidy, option B, tidy, option C, disordered, or option D, to be sad? So option B जो है आपका tidy, that is the correct answer. In next question, you have to find the one word substitution for this particular sentence. The essential or characteristic customs, habits, and conventions of a society or community is what? Option A, Morse, option B, wag, option C, recant, or option D, delegate. So option A, Morse, is the correct answer. Next question, you have to find the opposite of the word rancid. Option A, fresh, option B, stale, option C, tasteless, or option D, contract. तो यहाँ पर option B, stale जो है, that is the correct word, which is the opposite of the word rancid. Next question, find the one word substitution. Military waking up signals in the morning. Option A, flux, option B, revile, option C, sine qua non, or option D, promenade. So यहाँ पे option B, which is a revile, is the correct answer, which is a one word substitution for military waking up signals in the morning, that is called revile. Next, you have to find out, or you have to tell the synonyms of these particular words, because एक साथ मैंने इसलिए लिख दिया because guys अलग अलग shift के अलग अलग पूछे गए थे. Now I have like combined them all here in one question instead of asking them in different questions. So you can watch all the synonyms that has been asked in all the shift of the examination here in one question. So talking about hostile, hostile का synonym can be unfriendly and aggressive. टॉक्सिक की बात करी जाए तो डेंजर, पॉइजनस. हैरेस की बात करी जाए तो अनॉय, डिस्टर्ब और प्रोवोक. इंट्यूटिव की बात करी जाए तो कंजेनाइटल, इंस्टिंक्टिव. लेथर्जिक की बात करें तो लेजी, टॉपिड और स्लगिश. सो दीज आर दी सिनोनिम्स फॉर दीज वर्ड्स. लाइकवाइज आपसे पूछा गया था एलिविएट का सिनोनिम, विच मीन्स लेसन और डिक्रीज. डिलीजेंट का है हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस. फैटल का है डेडली, लीथल, मॉर्टल. Altruist का है giver, kind, magnanimous. So a person who is a giver, a person who is a kind person, and he is a giver, he or she is a giver. So you may refer to that person as he's has a magnanimous, character. He's a giver. He's altruist. Next is jovial. Jovial means cheerful, jolly, happy. Next is berserk. Berserk is something that I told you in my preparatory videos also. मैंने आपको जो synonyms, antonyms के preparatory videos करवाए थे, उसमें भी berserk हमने discuss करा था, which means agitated, mad, and crazy. Because this question, this particular synonym has been recently asked very frequently in many more competitive examinations. Next is stoic. Stoic is indifferent, apathetic. Likewise, for edible, it is eatable, delicious. Timid, coward, fearful, shy. Equivocal, ambiguous, obscure. Trembling, agitation, flutter, shaking. Stagnant, for the word stagnant, it can be idle, lazy. For the word elated, it is happy, jumpus, gleeful. Next, for miserable, it can be distressed, doleful, and unhappy. And for confiscate, it can be like seize. Confiscate is when you seize something, then you use this particular word, or you can also say impound for that. So impound and seize can be used as a synonym for confiscate. Okay, those were the synonyms. Now we are going to discuss the antonyms of the following words that were asked in the SSC CGL examination. So the very first word is moderate, and the antonyms are tough, harsh. For frugal, it's a lavish, extravagant. For vouch, it's a hinder or oppose. For vigorous, it's frail, weak. For rigorous, it's lenient, easy. Next word is skeptical. Skeptical, guys, is a very popular word that has been used recently, which means when you are in doubt. You can say shanka mein hona ya shanki.
When you are in doubt, you use that I am in a little skeptical mode because I am not very much sure about it. I am in doubt. So इसके जो antonyms होते हैं, that can be used as naive, credulous, or gullible. Next is for indivisible, it's divisible, separable. Next for LA, it is dissatisfied, aggravate, intensify. And next for scary, it is cheering, pleasant. So something which is very pleasant or something which is very comforting, that is the antonym for the word scary. Next, you were asked that a person who speaks many languages is called what? So polyglot is the term which is referred and given to a person who, speaks multiple languages, linguistic, multilinguistic, you can say. There are different words, but polyglot is the only word that has been given to the person who speaks many languages. नेक्स्ट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो आपको पूछे गए थे ये वर्ड जिनको आपको बताना था. सो अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स इज एरिस्टोक्रेसी. फ्लोरिस्ट पूछा गया था. सो फ्लोरिस्ट इज बेसिकली अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज and cut flowers and sell them out. Next, dipsomania. So dipsomania is basically a strong need to drink alcohol. When a person is in a habit of drinking alcohol and there comes a day when he or she does not have it, so he or she might get in a situation of dipsomania. So dipsomania is basically when a strong need of drinking alcohol is needed. Next, on the ball. So on the ball is alert or alive. Sit on the fence. So sit on the fence, avoiding making a decision or choice. When you say that I'm sitting on the fence, means you are avoiding to make a decision or a choice there, rather giving your choice. At my wits' end, to be so confused or worried or annoyed that you do not know what to do next. Next is bureaucracy. So bureaucracy is basically a system of government in which most of the important decisions are taken by state officials rather than by the elected representatives. So for this particular thing, what word are you going to use? You can say bureaucrat. Call it a day. So call it a day is someone, sometime when you stop doing something because you think that you have done enough. So you might just say, let's call it for a day. Next is break a leg, good luck. So now we don't say, good luck anymore, all the best, just break a leg. Next, blessing in disguise. So something that seems bad and very unlucky at first, but when it turns out to be good in the end, you say blessing in a disguise or blessing in disguise. Next, you were asked some of the misspelled words of these following words. आपको spelling errors ढूंढना था और आपको words जो पूछे गए थे वो ये थे. We have shared the correct spelling words with you, so you can see that. तो receipt का पूछा गया था, mischievous का पूछा गया था, received का पूछा गया था, abysmal का पूछा गया था और definitely का incorrect, incorrect पूछा गया था, incorrect word. That's it guys, those were the very important आपके English के questions जो कि आपको SSC CGL 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे. We have tried to come up with every little shift में पूछे गए question, but still if you guys think that we have missed out on something, then you guys are always there to help us. तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिएगा बाकी के जो क्वेश्चंस हैं. इट विल हेल्प दी अदर कैंडिडेट्स. और गाइज आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर टाइम. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए मच लव एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स. और गाइज एमटीएस वालों प्लीज जुड़े रहना because we will be coming up with the MTS preparatory videos soon on our channel.